नमस्ते, हमेशा खुश रहो बेटी। Myself JV'n Dr. Archana VERMA, Assistant Professor in Department of Homeopathic Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jayopur Vidyapeeth-Fhs-Burn, University, JV'n. Now today we are starting with new topic, that is burn. First of all, I discuss the introduction of burn. Burn is defined as a wound caused by exogenous agent leading to coagulation, necrosis of tissue. Causes: thermal burn. First is thermal burns, dry heat, contact burn, flame burn, moist heat, scald burn, smoke and inhalation injury. तो थर्मल बर्न किसके थ्रू? ड्राई हीट हो सकता है, कॉन्टेक्ट बर्न, फ्लैम, मॉइस्ट हीट, स्कर्ट बर्न, स्मोक एंड इनहेलेशन. थर्मल बर्न, sorry, chemical burn may be acids and alkaline. Electric burn, high and low voltage. Cold burn, frostbite. Radiation, sunburns. So these are the causes of burn. Now classification of burn. First, depending on the percentage of burn. First, mild. Partial thickness burn less than 15% in adult or less than 10% in children, or fully thickness less than 2%. Next, moderate. Second degree, 15 to 25% burn in adult or 10% burn, 10 to 20% burn in children, or third degree, 2 to 10% burn. Major burn, secondary degree, more than 25% burn in adult or more than 20% burn in children, or third degree, more than 10% burn or burn involving eye, ear, feet, hand, perineum, or in all inhalation and electric burn. Now, second is depending on thickness of skin involved. First degree, injury localized to the epidermis. फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? जो स्किन की एपिडर्मिस, जो सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस, वो इंजर्ड होगी. देन सेकेंडरी डिग्री, सुपरफिशियल सेकेंडरी डिग्री इंजरी टू द एपिडर्मिस और सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस. तो सेकेंड डिग्री में कौन सी? एपिडर्मिस एंड सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस, दोनों एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा. नाउ डीप एंड सेकेंडरी डिग्री इंजरी थ्रू द epidermis and deep up to the reticular dermis. फर्स्ट में तो क्या हुआ था? फर्स्ट में ओनली डर्मिस इंजर्ड हुई थी. सेकेंड डिग्री में डर्मिस एंड पेपिलरी, सॉरी, सेकेंड डिग्री में एपिडर्मिस और पेपिलरी डर्मिस. एंड थर्ड डिग्री में क्या होगा? एपिडर्मिस, डर्मिस इनटू सबक्यूटेनियस फेट भी उसका इंजर्ड होगा. So first degree injury localized to epidermis, second degree superficial, secondary degree injured to epidermis or superficial papillary dermis. Deep secondary में भी दो पार्ट है, superficial and deep. Superficial में तो epidermis और epidermis and superficial papillary dermis, जबकि डीप सेकेंडरी डिग्री अगर बर्न है पेशेंट को तो उसमें क्या इंजर्ड होगा? एपिडर्मिस तो होगी, साथ में उसके डीप अप टू रेटिकुलर डर्मिस, तो उस रेटिकुलर डर्मिस तक इंजर्ड होगा. थर्ड डिग्री फुल थिकनेस इंजर थ्रू द एपिडर्मिस और डर्मिस इनटू द सबक्यूटेनियस फेट. फोर्थ डिग्री इंजर थ्रू द स्किन सबक्यूटेनियस फेट इनटू अंडरलाइनिंग मसल्स एंड बोन. थर्ड डिग्री में एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस फेट भी उसका बर्न होगा. फोर्थ डिग्री में सबक्यूटेनियस बर्न के साथ में जो मसल्स बोन है वो भी बर्न हो जाएगी. तो डिग्री ऑफ बर्न फर्स्ट में ओनली एपिडर्मिस हो रही है, सेकेंडरी में डर्मिस और पेपिलरी डर्मिस हो रही है. थर्ड डिग्री में डर्मिस भी, एपिडर्मिस और डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फेट भी बर्न हो रहा है. नाउ क्लिनिकल फीचर, अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है तो क्या सिम्टम्स आएंगे? तो फर्स्ट डिग्री बर्न, रेडेंट स्किन, जो स्किन का कलर होगा कैसा होगा? रेडनेस हो जाएगी वहाँ पे. पेन एट द बर्न साइट, इन्वॉल्व ओनली एपिडर्मिस,
blanch to touch, have intact epidermal barrier, do not result in scarring. Example: sunburn, minar skull from kitchen accident. Now superficial secondary burn. Intense pain, white to red skin, blister, involves epidermis, papillary layer of dermis, space, hair follicles, sweat gland, etc. Erythematous and blends to touch. Very painful, sensitive, no or minimal scarring. Spontaneously re-epithelialization for weakened epidermal structure in 7 to 14 days. तो सुपरफिशियल, अगर सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न है तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? उसको एक तो इंटेंस पेन हो सकता है, फर्स्ट डिग्री में स्किन का कलर रेड था, इसमें वाइट टू रेड हो सकता है, ब्लिस्टर फॉर्म हो सकते हैं, और उसमें फर्स्ट डिग्री में एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट था और सेकेंड डिग्री में एपिडर्मिस और पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड वो भी इंजर्ड हो सकती है। इरिथमेटस और ब्लैंक्स टू टच, और जो स्किन होगी वो वेरी पेनफुल होगी और सेंसिटिव होगी, या फिर स्कारिंग नहीं भी हो सकती या फिर मिनिमल स्कारिंग हो सकती है पेशेंट को। जो इसका एपिथेलाइजेशन है ये एपिथेलाइजेशन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और कितने टाइम में 7 to 14 डेज में। नाउ नेक्स्ट डीप सेकंड डिग्री बर्न, इंजरी टू deeper layer of dermis, that is reticular dermis, appearance pale and matted, do not blanch to touch, capillary return suggest or absent, less painful, remain painful to pin prick, take 14 to 35 days to heal by re-epithelialization from hair follicle and sweat gland. Keratinocytes often with severe scarring, contracture possible. थर्ड डिग्री बर्न, ड्राई स्किन कैसी हो जाएगी? ड्राई लेदर स्किन, वाइट, ब्लैक, ब्राउन या कैरेट स्किन हो जाएगी। लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, जो बर्न पार्ट है वहाँ पे जो सेंसेशन हो गया या तो लॉस होंगे, एब्सेंट होंगे, वहाँ पे लिटिल पेन हो सकता है। ऑल डर्मल लेयर एंड टिश्यू में बी इन्वॉल्व। फोर्थ डिग्री इन्वॉल्व स्ट्रक्चर विद द स्किन, मसल्स, बोन। फोर्थ डिग्री में सबक्यूटेनियस के साथ में क्या मसल्स और बोन का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। नाउ असेसमेंट ऑफ बर्न, वॉलेस रूल ऑफ 9, जो रूल ऑफ 9 है उसके अकॉर्डिंग अपन कैसे मेजरमेंट करते हैं बॉडी का, पेशेंट को कितना बर्न हुआ, किस तरह से उसका परसेंटेज निकालते हैं। अगर हेड पे बर्न है तो उसको कितना 9%, तो हेड में भी उसका फ्रंट एंड बैक दोनों इन्वॉल्व होंगे तो 9% का, बैक का है 18%, चेस्ट में भी 18%, अगर चेस्ट पे बनना हो तो उसको 18% में कैलकुलेट करते हैं। राइट आर्म 9%, लेफ्ट आर्म 9%, राइट लेग 18%, लेफ्ट लेग 18% और पेरिनियम 1%। ऐसे ही बच्चों में अगर हेड फ्रंट और बैक का तो 18%, 18%, चेस्ट 18%, बैक 18%, राइट आर्म 9%, left arm 9%, perineum 1%, right leg 13.5%, left leg 13.5%. Assessment of burn. Lawns and blowers chart. Each part of body is individually assessed for involvement of burn. Now pathology. Local change, thermal injury, causes by coagulation, necrosis of epidermis or underlying tissue, with depth of injury depend or temperature on which skin is exposed, the specific heat of position, causative agent, duration of exposure. The area of cutaneous or superficial injury has been divided into 3 zones. Zone of coagulation. In zone of coagulation, necrotic area of burn where cells are disrupted. Zone of stasis,
It is area surrounding zone of coagulation where vessels, leak and vessel damage present. Zone of hyperemia. It is an area where vasodilation or inflammation is present. Now systemic change. Cardiac, decreased cardiac output. Pulmonary respiratory insufficiency is a secondary process. Can be progressed to respiratory failure, gastrointestinal, decrease or absent, GI motility, cooling, ulcer formation, metabolic, hypermetabolic state, increase oxygen and caloric requirement, increase in core body temperature, immunological, loss of protective barrier, increased risk of infection, suppress of humoral and cell mediated immunoresponse. Now in next class we will discuss the management of burn. This session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will be resolving it. Thank you.